हेलो हाय नमस्ते वेलकम टू दिस चैनल माई सेल्फ सौम्य रंजन। तो आम बायो सेक्शन देखुला हाइलाइटेड पॉइंट्स फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज आम देखा गोटे इम्पोर्टाट टॉपिक इकोलॉजी आउ एथिरू मोस्ट एव्री इयर गोटे क्वेश्चन सियोर आसवाटा आसे। आज आम देखा एनवायरमेंटल इश्यूज। फास्ट अफ ऑल मुझे गोटे कथा चाहिए जी भी वीडियो देखुं ट्राए करिए वीडियो देखि सारा पर कि पूर्वर जोटा भी हो आटलिस्ट ए चैप्टरटा को थोड़े वन बाय वन लाइन बाय लाइन पूरा भलसे पढ़ीदेवे। तापर हाइलाइटेड पॉइंट को मन रखापी ट्राए करिए कौन पाई ना हाइलाइटेड पॉइंट मुझे करदे किंतु यदि तार बेसटा कौन यदि जान नथिबे तो प्रॉब्लम हम सॉरी। तो से समस्ते आटलिस्ट थोड़े एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ीदेवे एथिरू। तो आज हम देखिए एनवायरमेंटल इश्यूज चलते। फास्ट ऑफ ऑल आम देखा पॉल्यूशन कौन जमती कि आम मेंशन करें पॉल्यूशन इज एनी डिजायरेबल चेंज इन फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर लैंड वाटर एंड सॉइल। माने जो कौन भी माने अनिच्छाकृत समथिंग कौन से ओडिया नाटा मन पड़नी अनडिजायरेबल जोटा से चेंज जोटा है आम पॉल्यूशन। आउ एजेंट्स दैट ब्रिंग अबाउट सच एन अनडिजायरेबल चेंज आर कॉल्ड एज पॉल्यूटेंट्स। जी कॉज करते पॉल्यूटेंट्स ही कहुए। In order to control environmental pollution, the government of India has passed the Environmental Protection Act। यहाँ मन रखिए Environmental Protection Act के आसला ना 1986 रे कौन पाई ना टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट लाइक एयर वाटर एंड सॉइल। ये गला इम्पोर्टेंट पॉइंट जोटा कि मुझे हाईलाइट कर देछि। आसला एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल। ये डायग्रामटा देखिए भलसे। देर आर सेवराल वेज ऑफ रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर माने जो कज कर जो पार्टिकुलेट मैटर गोटा एयर पोल्यूशन ताकू रिमूव करने किसी सेवराल वे अच्छी। आउ जो भितर गोटे वे है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एग्जाम जो सॉरी जो डायग्रामटा देइछु ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर व्हिच कैन रिमूव ओवर 99% particulate matter present in the exhaust from a thermal power plant। ओके इम्पोर्टेंट एटा। तापर देखिए अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB पार्टिकुलर साइज 2.5 माइक्रोमीटर्स और लेस इन डायमीटर पार्टिकुलर मैटर 2.5 आर रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। माने 2.5 माइक्रोमीटर से जदि कम है सेटा ग्रेटेस्ट हार्म ह्यूमन हेल्थ को कज कर। तो ये किए कहला ना CPCB कहला एटा मन रखिए। तापरे कैटालिटिक कन्वर्टर्स लाइक हैविंग एक्सपेंसिव मेटल्स नेम प्लैटिनम पैलेडियम रोडियम as the catalysts are fitted into automobiles for reducing emission of poisonous gases। माने एयर कंट्रोल एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने से गोटे उपाय बतला जमी से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से ऊपर कहला। एटी कौन कौन ना कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैविंग एक्सपेंसिव मेटल्स नेमली प्लैटिनम पैलेडियम एंड रोडियम as the catalysts आर फिटेड इनटू ऑटोमोबाइल्स फॉर रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस। एक्चुअली कौन हुए ना जो आम डीजेल की पेट्रोलटा माने भलसे जले ना सेटा कौन हुए ना कार्बन मोनोक्साइड प्रोडक्शन जो बाहर को छाड़ी दिए। तो कार्बन मोनोक्साइड बहुत डेंजरस बहुत। तो से कौन करना आम जो कैटालिस्टटा से फ्यूएलटा भलसे ये कले भलसे चलले तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन हो जोटा कि कार्बन मोनोक्साइड अपेक्षा कम टिके हार्मफुल। ओके किंतु कार्बन मोनोक्साइड है बहुत हार्मफुल। तापर इन इंडिया द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट एयर पे आसला ना 1981 बट वाज अमेंडेड इन 1987 टू इंक्लूड नॉइज एज एन एयर पोल्यूटेंट। ओके तो ये गला गप ये सब गप। देखिए CNG फुल फॉर्म कौन ना कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये गला से कहे कि CNG यूज कर पेट्रोल बदल। ओके ये बॉक्स किसी दरकार नहीं। तापर आसला वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल के आसला तार वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के आसला 1974 रे।
कौन पाए ना टू सेफगार्ड आवर वाटर रिसोर्सेस। अच्छा जो आम डोमेस्टिक घर जो मान सब घर टाउन सहर हो कि घर देखिए सब मान नाला फाड़ करते ड्रेनेज करते तो जो से जो घर जो मटेरियल बाहर माने वेस्टेज जो बाहर से कौन कौन थाए देखो ये जो बॉक्सटा तो देती ये जो बॉक्सटा देती है ता पूर्व किंतु आम देखी ये जो आम हाइलाइटेड कर मियर 0.1% इम्प्यूरिटीज मेक डोमेस्टिक सेवेज अनफिट फॉर ह्यूमन यूज ओके 0.1%। तो देखिए यहीटा जो देती आम डिजेबल मटेरियल्स यहाँ टी इम्पोर्टाट आम जाने से सैंड थाए सील थाए क्ले थाए फिकल मैटर थाए बैक्टेरिया थाए क्लोथ थाए पेपर सब किसी थाए से इम्प्यूरिटीज किंतु मेन जिन कौन ना डिजेबल मटेरियल्स लाइक न्यूट्रिएंट्स कौन कौन ना नाइट्रेट आमोनिया फॉस्फेट सोडियम कैल्शियम आउ ए भर माने यही सब तुम मन रखिए नाइट्रेट आमोनियम फॉस्फेट सोडियम कैल्शियम एगुड़ा भी प्रेजेंट थाए यहाँ इंपोर्टाट क्वेश्चन आसला भी थे मे भी आउ थे आसपारे कौन पाए ए रिपीट भी क्वेश्चन हो इंपोर्टाट जिन नाइट्रेट एंड फॉस्फेट जोटा कि आम पर भी देखा ए किंतु ये सब दिख नाइट्रेट आमोनिया फॉस्फेट सोडियम कैल्शियम एगुड़ा भी थाए ओके। ये डायग्रामटा देखते डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड कंसंट्रेशन एटी आम कौन जाने ना गोटे लेक रे कि आम आटमोस्फियर देख ऑक्सीजन अच्छे कि वाटर कौन हम ऑक्सीजन डिजल्व हो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांडटा हाई हम डिजल्व ऑक्सीजन कमिज कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जब BOD लो हम से ऑक्सीजन डिजल्व ऑक्सीजन हाई रहा जो BOD कम रही से वाटर बा से लेकटा ठीक अच्छे आउ डिजल ऑक्सीजन ठीक ठाक काम करगानिजम फिश फिश से फिश थी अदर बैक्टेरिया जहाँ भी थी काम ठीक दूसरी। तो ये गोटे पॉइंट देती ना डिजल्व सॉल्ट सच एज नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टॉक्सिक मेटल आयन्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एगुटा मुझे कहली इंपोर्टाट मन रखिए नाइट्रेट एंड फॉस्फेट ओके। तापर आसला BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तापर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द रिसीविंग वाटर बॉडी कंज्यूम ए लॉट ऑफ वाटर जमी मुझे कहली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन ए बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन रिसीविंग वाटर बॉडी कंज्यूम ए लॉट ऑफ ऑक्सीजन जोटा कि को ऑक्सीजन ना डिजल्व ऑक्सीजन गुड़ा एंड एज ए रिजल्ट देयर इज शार्प डिक्लाइन इन द डिजल्व ऑक्सीजन कमिज तो डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेवेज डिस्चार्ज दिस कॉजेस मोर्टालिटी ऑफ द फिश एंड अदर aquatic क्रिएचर्स ओके। BOD कमिज आमर डिजल्व ऑक्सीजन ठीक ठाक रही BOD बढ़ीज कौन हम ना आम माइक्रो यूज करेंगे से आम जो न्यूट्रिएंट गुड़ा आसी खासकर फॉस्फेट आ नाइट्रेटा ताकू ये करने ताकू डिग्रेड करने अधिका दरकार हम परिश्रम फल कौन हुए ना डिजल ऑक्सीजन कमी जाए ओके। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर्स आल्सो कॉजेस एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लांक्टोनिक एटा मन रखिए फ्री फ्लोटिंग एल्गी प्लांक्टोनिक आल्सो कॉल्ड एन alga bloom which imparts a distinct color to the water bodies. Algal bloom causes deterioration of water quality and fish mortality. Presence of large amounts of nutrients in waters also causes na excessive growth of planktonic algae and cause the algal bloom. There are large amount of nutrient ହେଇଯିବ କ'ଣ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ଲାଙ୍କଟନିକ୍ algae अधिका ग्रो कर अधिका ग्रो कले कौन हम algal bloom देखा ओके which imparts a distinct color to the water bodies and algal blooms cause deterioration of the water quality and fish mortality. algal bloom कौन हम यदि algal bloom है कौन हम ना वाटर क्वालिटी कमिज आ फिश मोर्टालिटी अधिका हो। दिस आर प्लांट्स ऑफ गोटे अच्छी प्लांट आम वाटर हासिएंथ जोटा कहुए इकोनिया क्रेसिपिस एटा कौन कहुए टेरर ऑफ बेंगल। ये क्वेश्चन भी आसपार वाटर हासिएंथ कौन कहुए ना टेरर ऑफ बेंगल इकोनिया तार अदर ना वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोब्लेमेटिक aquatic weed ओके। देखो algal bloom केमी हाँ जमी कहली टेरर ऑफ बेंगल
they grow abundantly in the eutrophic water bodies and lead to imbalance in the ecosystem dynamics of the water bodies. ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଲା ଆମର ବାୟୋମାଗ୍ନିଫିକେସନ୍। ଏଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ନା କ'ଣ, ଏଟ୍ few toxic substance like DDT or mercury କ'ଣ କରନ୍ତି, often present in the industrial wastewaters can undergo biological magnification by biomagnification in the aquatic food chain. तो biomagnification कौन ना refers to increasing in the concentration of the toxicant, माने फूड चेन समस्त जानते तो सब फूड चेन जो यही टॉक्सिकांट गुड़ाकर माने लेवलटा इनक्रीज हो जाए, अमाउंटटा इनक्रीज हो जाए, ताकू कहे बायोमैग्निफिकेशन। तो कौन देखिए बही ना बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकांट एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स। दिस हैपेंस बिकॉज ए टॉक्सिक सब्सटेंस accumulated by the organisms cannot be metabolized or excreted and is thus passed on to the next higher trophic level. This phenomenon is well known for the mercury and DDT. Example देमची देजी थी, देखो वाटर ये जो एग्जांपल देखो, यही एग्जांपल देखो बॉक्सटा लेफ्ट साइड जोड़ा देछि। फास्ट कौन होइछ, वाटर केते परसेंट DDT देछि ना 0.003 पार्ट्स पर बिलियन। तापर जू प्लांक्टन फ्लोटिंग स्टेज जोड़ा, तापर देखो सेटर केमति बढ़िछि, तापर फिश को गला, तापर लार्ज फिश खाइला ताको, तापर हला हमरो फ्लाइंग। तो फिश इटिंग बर्ड्स गुड़ा जो खाऊँ फिश को कौन हो ना DDT केते बढ़िया हो, देखो 25 पार्ट्स पर मिलियन, देखुन केते बढ़िगला। तो या कहगला बायोमैग्निफिकेशन। हाई कंसंट्रेशन ऑफ DDT डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स। एटा क्वेश्चन आसे तो DDT कंसंट्रेशन हम कौन हम अधिका, यदि कंसंट्रेशन अधिका होगा कौन हम ना डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बर्ड्स रे डिस्टर्ब करे एंड एटा कौन कर या फल कौन हम ना व्हिच कजेस थिनिंग ऑफ एग सेल एंड देयर प्रीमैच्योर ब्रेकिंग इवेंचुअली कजिंग डिक्लाइन इन बर्ड पॉपुलेशन। मु जहाँ भी यही टॉपिक रे हाइलाइटेड करछि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एथुर आसी सारी नहले आसबार बहुत संभावना अच्छे। ओके कौन पाना मुझे बहुत एनालिसिस करी पॉइंट गुड़ा बोल बा हाइलाइट कर। यूट्रोफिकेशन कौन ना इज ए नेचुरल एजिंग ऑफ ए लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। यूट्रोफिकेशन कौन ना गोटे नेचुरल एजिंग ऑफ द लेक केमिति बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स water. जमती इन ए यंग लेक द वाटर इज कोल्ड एंड क्लियर सपोर्टिंग लिटिल लाइफ। गोटे न्यू लेक रे वाटरटा ठंडा थाए आउटे लाइफ सिस्टम माने सस्टेन करता है, किंतु विथ टाइम स्ट्रीम्स ड्रेनिंग इनटू द लेक इंट्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ये जो कथाटा कहते पूर्व नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कथा ये आसला यूट्रोफिकेशन रे कौन हुए ना नाइट्रोजन और फॉस्फोरस अधिक हो जाए विथ एनकरेज द ग्रो। एटा कौन करती ना ग्रोथ ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कर दियंते। As the lake's fertility increases, plants and animals like birds and organic remains begin to deposit on the lake bottom. And over the centuries, as silt and organic debris pile up, the lake grows shallower and warmer. तो बढ़ी जीव लेक पूरा स्वालोर हो मैं छोट लेक छोट हो एंड गरम हो सॉरी with warm water organisms supplanting those that thrive in a cold environment. Marsh plants take root in the shallows and begin in the original lake basin. Eventually, the lake gives way to large masses of floating plants by bog, finally converting into land. Our lake टा कौन हो land को convert हो जाए यूट्रोफिकेशन द्वारा। आ यार मेन रीजन हूँ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। मन रखिए यहाँ क्वेश्चन आसला थोड़ा कौनटा डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट साइज ऑफ द लेक एंड अदर फैक्टर्स द नेचुरल एजिंग ऑफ द लेक मे बी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। दिस फेनोमेनन एटा भी कौन कह जाए ना एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन कह जाए। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी लेक्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ हैव बीन सिवियरली यूट्रोफिकेटेड बाय स्वेवेज एंड एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। The prime contaminated are nitrates and phosphates. जब देखिले act as plant nutrients. They overstimulate the growth of algae. माने algae रो growth रा boost
stimulate କରନ୍ତି ତାପରେ which act as a plant nutrients causing unsightly scum and unpleasant odors and rubbing of water and dissolved oxygen vital to the other aquatic life. At the same time, the other pollutants flowing into the lake may poison whole populations of fish whose decomposing remains further deplete the water's dissolved oxygen content. ଆଉ dissolved oxygen भी कमिजाए. In such fashion, the lake can literally choke to death. Okay. तापरे देखिए तापरे कौन अच्छे आउ इम्पोर्टाट किसी तापरे ग्रीन हाउस गैसेस. अच्छा मुझे आमर एक्चुअली बही मेंशन है ग्रीन हाउस गैसेस किए एटा समस्ते गूगल करेंगे. ओके आउ कमेंट रे कहे आमर ग्रीन हाउस गैसेस किए किए आउ मन रखिए यही ग्रीन हाउस गैसेस रु क्वेश्चन आसूची. Without a greenhouse effect, the average temperature of Earth's surface would have been minus 18 degrees centigrade rather than the present average of 15 degrees centigrade. Important, मन रखिए. During the past century, the temperature of Earth has increased by 0.6 degree Celsius. तापर आसला ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्राटोस्फियर. बैड जोन जानते आम जोटा ट्रोपोस्फियर माने जो लेयर अच्छे एटमोस्फियर तार लोयर जोड़ा थाए से बैड ओजोन किंतु गुड ओजोन कौटा ना स्ट्राटोस्फियर ऊपर जोड़ा थाए जो ओजोन लेयरटा एंड इट एक्ट्स एज ए शील्ड अब्जर्विंग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन. यूवी रे जोड़ा हमरा ये करे ऑब्जर्व करे. तो यूवी रेज आर हाईली इंजुरियस टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिंस डीएनए एंड प्रोटीन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स preferentially absorb UV rays and its high energy breaks the chemical bonds with these molecules. The thickness of the ozone in a column आउ मन रखिए एटा क्वेश्चन मत भीतर कौन आसला ओजोन रो थिकनेस मापिया के यूज करा जाए ना डॉप्सन यूनिट यूनिट ना डॉप्सन यूनिट ओजोन थिकनेस मापिया आ सीएफसी जानते क्लोरोफ्लोरो कार्बन जोड़ा कि आमर फ्रिज रे यूज करा आ ये भी गोटे आमर कौन global house gases. Although ozone depletion is occurring widely in the stratosphere, the depletion is particularly marked over the Antarctica region. मन रखिए this has resulted in formation of large area of thin ozone layer. आउ thin ozone layer को कहा जाए ओजोन होल. ओके तापर आसला बी विषय किसी देछि अल्ट्रावायलेट जो रेटा हमर ABC अच्छी तो बी विषय देछि तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ wavelength shorter than UVB are almost completely absorbed by Earth's atmosphere. Given that ozone layer is intact but UVB damages DNA and mutation may occur. अंगड़ा जहाँ पूर्व पढ़िला it causes aging of skin, damage to skin cells and various types of skin cancers. In human eye, cornea absorbs UVB radiation and high dose of UVB causes inflammation of cornea called snow blindness. मन रखिए बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट एंड कैटरैक्ट एटसेट्रा. सच एक्सपोजर्स में परमानेंटली डैमेज द कॉर्निया आल्सो एंड recognizing the deleterious effects of ozone depletion, an international treaty मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जोड़ा को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कथा आसो से कौन ना ओजोन डिप्लीशन विषय में कहला. आउ मुझे जिते भी इंटरनेशनल ट्रिटी गुड़ा एनवायरनमेंट इश्यू केतटा से गुड़ा मुझे गोटे सेपरेट भिडियोटे आनबी. ओके आउ से सेपरेट भिडियो भी मुझे नेचुरल रिसोर्सेसटा ऐड करदेवी. आउ से भी क्वेश्चन आसूसी से ट्रिटी क्वेश्चन आसुचे आउ नेचुरल रिसोर्स क्वेश्चन सियोर तो सियोर आसुचे. केबे हिला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा हिला 1987 टू कंट्रोल एंड कंट्रोल द एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. तापर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 ऑफ इंडिया हैज रेकमेंडेड 33% फॉरेस्ट कवर फॉर द प्लेन एरियाज एंड 67% फॉर द हिली एरियाज. एटा भी मन रखिए. तापर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जमी झूम कल्टिवेशन जोड़ा आमर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट गुड़ाक जोटा कि आमर डिफरेस्टेशन को भी कंट्रीब्यूट कर. आउ ये गोटे देर अमृता देवी कौन कले ना से आउ झील 3 जन को एक्चुअली
ଯେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ 1973 ସରି 1731 ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କିଙ୍ଗ ସେଠିକାର କ'ଣ କହିଲେ ନା ତାଙ୍କ ମାନେ ମହଲ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମିନିଷ୍ଟର ପଠେଇଲେ ତାଙ୍କ ୱାର୍କରମାନଙ୍କୁ ତ ସେ ଯାଇକିନା ଗଛ ଆଣୁଥିଲେ ମାନେ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଏରିଆ ପାଇଁ ସେ ଯେହେତୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ମାନ ତ ସେ ଟିକେ କ'ଣ କଲେ ନା ମାନେ ମନା କଲେ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମାନିଲା ନାହିଁ ତ ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଝିଅ ସେ ଗଛକୁ ଧରିକି ମାନେ କୁଣ୍ଡେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇପଡ଼େ ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ବି ମାନେ କାଟିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କ ପରେ ବି ବହୁତ କିଛି ମାନେ ହେଇଥିଲା ତ ଏଇ ନାଁଟା ମନେ ରଖିବେ ଅମୃତା ଦେବୀ। ତାପରେ ଆସିଲା ଚିପ୍କୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଗୋଟେ ଆସିଛି ଆମର ଅମୃତା ଦେବୀ ବିଷ୍ଣୋଇ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଚିପ୍କୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଘରୁଆଲ ହିମାଳୟଜରେ 1974 ହେଇଥିଲା ଲୋକାଲ ଓମେନ୍ ସୋଡ୍ ଏନରମସ୍ ବ୍ରେଭେରୀ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ ଟ୍ରିଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ସ ବାଇ ହଗିଂ ଦେମ୍ ଓକେ। ତାପରେ ଆସିଲା JFM ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କେଉଁଦିନ ଆସିଥିଲା ବୋଧେ କ'ଣ କେଉଁଥର ଜଏଣ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇ ସରିଗଲା ଆମର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁ ଆଉ ୟାକୁ ନେଇକି ଯେତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମିଳୁଛି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ରହିଲା ମେନ୍ ଜିନିଷ ସେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ସେଇ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ା ବି ନୋଟ୍ କରିଦେବେ ସେଇଟା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଗଲା ସ୍ମୋକ୍ ରହିଗଲା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଉଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ହଁ ଫଟୋ କେମିକାଲ୍ ସ୍ମୋକ୍ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟେ ବୋଧେ କେଉଁଥର ଆସିଥିଲା ତାର ସେ ପଚାରିଥିଲା କି ତାର ପାର୍ଟ କିଏ ନୁହନ୍ତି ତ ସେଇଟା ବି ଦେଖିଦେବେ ଗୁଗୁଲ୍ କରିକି ଫଟୋ କେମିକାଲ୍ ସ୍ମୋକ୍ ନହେଲେ ମୁଁ ସେ ଟ୍ରିଟିଟା ଆଣିବି ସେଥିରେ ବି ଆଣିଦେବି ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।